Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Good morning students. How are you all? हर बार मैं प्रेयर करती हूँ आज सोचा मैंने कि आपको कुछ डिफरेंट तरीके से प्रेयर करवाई जाए। आज मैंने आपको वेरी डिफरेंट तरीके से प्रेयर करवाई है। हरे कृष्णा हरे रामा राइट। और हरे रामा द नेम इज़ वेरी डिवाइन नेम, यानी कि बहुत ही आध्यात्मिक नेम है, जिसका नाम लेते ही हम हमारे जीवन के सारे दुख भूल जाते हैं और हमें खुशी मिलती है, राइट। कृष्णा का नाम लेके हम आज ईवीएस का सेशन शुरू करते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट हमने पढ़ा था डिफाइन एंड नेम एनी टू ऑफ ईच, राइट, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सॉरी, दिस इज द रिवीजन सेशन एंड रिवीजन सेशन के अंदर आपको ये मैंने क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं, जो चैप्टर नंबर 17 से चैप्टर नंबर 20 तक के हैं। बट येस, एग्ज़ाम में आपको चैप्टर नंबर 21, 22, 23 में से भी मैंने पूछा है, बट दैट इज़ वेरी लेस पार्ट। तो आपको उसमें से भी लर्न करना है, राइट, आपको उसमें से भी लर्न करना है। ओके, हम हमारे क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। आप सब बच्चे अपने साथ सिलेबस बुक लेके बैठेंगे। ओके, यू मस्ट हैव टू syllabus book. Okay, I am starting from chapter number 17, our festival, and the question number 1 is name 2 national festivals, right? Means we have to give in the answer 2 name of national festivals. As you know that we have 3 national festivals, right? First is the Independence Day, second is the Republic Day, and third one is the Gandhi Jayanti, right? Independence Day comes on 15th August, Republic Day is come on 26th January, and Gandhi Jayanti is come on 2nd October. Okay, and these three festival have their own
importance, right? The first one is the Independence Day. So why we celebrate Independence Day? Because our India becomes independent on this day, right? Britishers was leave our country in 1947. Yes, 15th August 1947. All Britishers leave our country and India become totally independent, right? So in honor of that, we celebrate every year Independence Day on 15th August, right? Number 2, Republic Day. So Republic Day is celebrated on 26th January. As you know that I was explaining you in the chapter why we celebrate Republic Day. So our constitution, what is the meaning of constitution? That is the rules and regulation of the our routine life, right? Legal rules and regulation. So what we have to follow rules and regulation, like safety rules regulation, we have to follow traffic rules. In our social life we must have to follow some rules, right? So that all rules are made by the Dr. Baba Saheb Ambedkar, right? And that rule we had follow, right? And that rules list of the that rules book, that calls a constitution, and this constitution launch on Republic Day, right? So it is launched on 26 January. In the honor of that, we had celebrate every year. We are celebrating every year Republic Day, right? And 2nd October, we are celebrating 2nd October as a Gandhi Jayanti, right? Gandhi Bapu, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is the father of nation. You know that now? हमारे महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन है. दैट्स वाई फादर ऑफ नेशन मीन्स राष्ट्रपिता, right? And honor of him, we all are celebrating every years on 2nd October as the Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti means on 2nd October, that is birthday of Mahatma Gandhi, right? That is birthday of Mahatma Gandhi. Now next, so before next we must have to we can write the answer as Independence Day and Republic Day, Gandhi Jayanti and Independence Day, Gandhi Jayanti and Republic Day, okay? But you have to write only two answer, okay? You have to write only two answer as a national festival. Who is known as the father of nation? Yes, who is known as the father of nation? I was recently I am telling you, Mahatma Gandhi. So what is the spelling of Mahatma? So we this is little bit big spelling, so we are break that spelling for learn, and after we are learning whole spelling, right? So let's see how. M-A-H-A Maha, T-M-A-Tma, Mahatma, M-A-H-A-T-M-A, right? M-A-H-A Maha, T-M-A, Tma, Mahatma, G-A-N-D-H-I, Gandhi, G-A-N-D-H-I, Gandhi, Mahatma Gandhi. And who is Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi is our father of nation, right? Mahatma Gandhi is the father of nation, okay? So you have to learn like M-A-H-A, right? Maha, then T-M-A, T-M-A, Mahatma, then G-A-N-D-H-I, Gandhi, Mahatma Gandhi. Fine, students. So you have to break this spelling break in two parts. After learn, you have to learn whole spelling. Okay. When do we celebrate it? Celebrate Christmas. हम Christmas कब celebrate करते हैं? When do we celebrate Christmas? So we celebrate Christmas on 25th December, right? We celebrate
क्रिसमस ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। और 25 दिसंबर को क्या था, व्हाट why we celebrate Christmas on 25th December? So as you know, we celebrate Janmashtami on Ashtami, right? This is the Shravan Ashtami, है ना? Because we celebrate this festival as honor of Lord Krishna, है ना? It is a birthday of Lord Krishna. So same like that, Christmas is birthday of Jesus Christ. Christmas is birthday of Jesus Christ, right? So honor of Jesus Christ we are celebrate every year as a Christmas on 25th December. Okay, so when do we celebrate Christmas? So we celebrate Christmas on 25th December. We celebrate Christmas on 25th December, which is the harvest festival of Kerala. Okay, Onam is the harvest festival of Kerala. Harvest means केरला जो है वो ग्रीन सिटी है, राइट? केरला है, वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और वो ग्रीनरी है इसीलिए वहाँ पे हार्वेस्टिंग भी होता है, यानी कि क्रॉप्स होता है, खेती का काम होता है. So on that reason, they are celebrating harvest festival, right? So Onam is the festival of Kerala. So Onam is the harvest festival of Kerala, right? जिसमें वो लोग अपने फार्म की, अपनी खेती की पूजा करते हैं, राइट? जिसमें वो लोग बोट रेस भी रखते हैं, है ना? और एक चैम्पियनशिप भी रखते हैं बोट रेस की. तो इस तरह से वो लोग ओनम को सेलिब्रेट करते हैं. So now, chapter number 19, good manners and habits, right? This is chapter number 19. As you know that chapter number 18 is skip, right? But I was explain you chapter number 18. और chapter number 18 के जो भी question है वो हमने chapter number 19 में cover कर लिए हैं. So, write 3 golden words. Which is 3 golden words? Please, sorry, thank you. Which is 3 golden words? The 3 golden words is please, Please, please. Sorry, Sorry, sorry. And thank you, Thankyou, thank you. Please, sorry, thank you. Right? Write 2 good manners. Okay, so when we use please, when we want something from somebody, we use please. हमें कुछ जब किसी से चाहिए तो हम उसको please कहते हैं. When do something wrong, so at that time we use sorry. अगर हम कुछ गलत करते हैं तो वो टाइम पे हम sorry कहते हैं. And when we use thank you, so we get something from somebody, we say थैंक यू. हमें किसी से कुछ गिफ्ट मिलता है या कोई हमें कुछ देता है एज अ प्रेजेंट, सो वी से थैंक यू, राइट? सो दिस 3 golden words you must have to remember whole life, because these three golden words is very useful. हम किसी से दादागिरी से बात नहीं कर सकते, है ना? हमें सबसे प्यार से बात करनी है, पोलाइटली बात करनी है. एंड फॉर दैट रीजन वी मस्ट यूज दिस 3 golden words, राइट? फर्स्ट वन इज द प्लीज, सेकेंड वन इज द सॉरी, एंड थर्ड वन इज द थैंक यू. ओके, सो प्लीज, सॉरी, थैंक यू. ओके, ये अगर आप लोगों को कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, अगर आपको आ गया तो योर लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल. सो नाउ 2 good manners. Which is 2 good manners? First one is respect elders. Respect your elders like teachers, parents, your brother, sister, friends, everyone. So you must have to respect elders. आपको आपके बड़े का मान सम्मान करना चाहिए, right? आपको आपके बड़े का मान सम्मान करना चाहिए. Now do your work yourself. सो आपको अपना जो काम है वो अपने आप करना चाहिए, राइट? डू योर वर्क योर सेल्फ. किसी को नहीं बोलना चाहिए कि मुझे ये काम करके दो. काफ़ी बच्चे कैसा करते हैं कि मम्मा मुझे बहुत कंटाला आता है, प्लीज़ मुझे होमवर्क करके दो, और मम्मा
मम्मा करके भी देते, बिकॉज मेरा लड्डू, मेरा बच्चा बेचारा थक गया तो चलो करके देते. सो डोंट डू दैट. ऑल स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू डू योर वर्क योर सेल्फ. आपको अपना काम अपने आप ही करना चाहिए. पेरेंट्स से, दीदी से, भैया से नहीं करवाना चाहिए. राइट. सो दिस टू गुड मैनर्स. वैसे तो बहुत सारे गुड मैनर्स है. राइट. ग्रीट एल्डर्स है, फिर एक सेकेंड है ना, वेलकम योर गेस्ट है, और बहुत सारे गुड मैनर्स है. बट वी हैव टू राइट दिस टू गुड मैनर्स इन दिस answer. So write two good manners. Respect your elders. ELDERS. You must have to remember this spelling. Elders यानी बड़े. Do your work yourself. आपको अपना काम अपने आप करना चाहिए. Do your work yourself. Right? Do your work yourself. Now next. Chapter number 20, that is safety rules. Okay. So what is the number, what is the question 1 of safety rules? Why we must follow safety rules? So we follow safety rules to keep ourselves safe. One second. Okay. So we must follow safety rules to keep ourselves safe. हमें safety rules follow करने चाहिए. क्यों करने चाहिए? तो हमें खुद को सेफ रखने के लिए सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. बिकॉज अगर हम सेफ्टी रूल्स नहीं फॉलो करते तो हम खुद को सेफ रख सकते नहीं हैं. ओके. सो हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स टू कीप आवर सेल्फ सेफ. Right. Now next, write the 3 colors in traffic light. अब traffic light में 3 colors कौन से हैं? You have to write that name. So first one is the red, second one is the yellow, and third one is the green. Red, yellow, green are the 3 colors in traffic light. So red color says stop. Yellow color says get ready, and green color says go. Okay. So these 3 colors are present in the traffic light, and these 3 rules of the as per color. Right. As जैसे कि रेड कलर का जो रूल्स है वो है स्टॉप. रेड कलर का जो रूल्स है वो है स्टॉप. येलो कलर का जो रूल्स है वो है गेट रेडी, मतलब व्हीकल रेडी करके चालू रखिए. देन ग्रीन कलर कहता है गो. ग्रीन कलर कहता है गो. सो दिस 3 color हैव देयर ओन वर्क, एंड वी मस्ट हैव टू फॉलो दैट. Right. So write 3 colors in traffic light. Red, yellow, green are 3 colors in the traffic light. So let's revise all question answer from chapter number 17 to 20. Okay. Name 2 national festival. First one is the Independence Day. Second one is the Republic Day. Right. And third one is the Gandhi Jayanti. Who is father of nation? Mahatma Gandhi. MAHATMAGANDHI. Mahatma Gandhi. When do we celebrate Christmas? We celebrate Christmas on 25th December. Which is the harvest festival of Kerala? Onam is the harvest festival of Kerala. Right? Now, chapter number 19. Write 3 golden words. Please, sorry, thank you. Right? Write 2 good manners. Respect your elders. Do your work yourself.
Chapter number 20. Why we must follow safety rules? So we must follow safety rules to keep ourselves safe. Write the three colors in traffic light. Red, yellow and green are the three colors of traffic lights. Okay. So, my lovely students, this is our question answer of the chapter number 17 to 20. You must have to read this question answer. You must have to learn these all question answer and write. After learning, you have to write in your homework book. Okay, so we'll meet in next session. Till then, enjoy your day. Have a nice day. Bye bye.